ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੀਸੀਪੀ ਸੈਂਡੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਏ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਇਲਸ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ। Namaskar and hello again from Nidhi Bhandari, your IELTS trainer. I hope you had a nice week. So today we are going to talk about another crucial question in IELTS, which is called the MCQs. This stands for multiple choice questions. So we've always done that. I'm sure you know what a multiple choice question is. There's a statement given and there are 4 options given. You have to select the most appropriate option for that statement. एक स्टेटमेंट दिया होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों में से आपने सिलेक्ट करना होता है कौन सा ऑप्शन सबसे सही मैच कर रहा है। So again, in schools and colleges, the kind of questions that we've been getting have been again quite easier to solve, very convenient to solve. When the IELTS came, again they've raised the bar, so it's going to be a little trickier as compared to what you did earlier. तो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। I'm going to give you certain inputs on how you must solve this kind of a question. Okay, to solve the MCQs there are 2 strategies. So we're going to talk about the first strategy. The first strategy says that you focus on the most appropriate option since the very beginning when you start finding the answer. मतलब आप फोकस करते हैं कि सबसे सही ऑप्शन या राइट ऑप्शन क्या है since the very beginning, जब आपसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। So how do we solve this? We read the question statement and we read all the options. You read the whole question. Second, then you understand all the options very carefully so that you can differentiate amongst them. उन चारों options में क्या difference है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है, ये आपने समझना है। Then keeping the question keywords in mind, I hope you remember the keywords. Content words होते हैं nouns, verbs, adjectives and adverbs, ठीक है? Keeping those words in mind, you go back to your passage. Passage में गए, वो आपने वहाँ पे वो keywords ढूंढे, जैसे ही आपको अपने 1 या 2 keywords मिले, आपने वहाँ पर अपना आंसर ढूंढना शुरू कर दिया। Now, when you're finding your answer, when you're scanning it, you are focusing on कि सबसे सही option क्या है, सबसे ज़्यादा match कौन सा कर रहा है। So this is, when you're focusing only on the most appropriate option since the very beginning. कि आपने यही ध्यान दिया, अच्छा इसके सबसे ज़्यादा कीवर्ड जिसके मिल रहे हैं ये आंसर होना चाहिए, ठीक है? This is called one strategy. Now 50% students find the answers like this and the rest 50% solve it with the other strategy, which is the second strategy. The second strategy says that you, instead of focusing on the most appropriate answer, आप focus करेंगे on the least matching option. That means the second strategy says that you focus on the least matching options first, which means कि आपने again same sequence रहेगा, आपने question पढ़ा पूरा, okay, then you understood the difference amongst the 4 options, you went back to your passage and you looked for the keywords where those keywords were and then you started scanning for your answer. अब जब अपना आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप फोकस ये नहीं कर रहे कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, आप फोकस कर रहे हैं कि सबसे लीस्ट मैचिंग आंसर क्या है, सबसे कम कीवर्ड्स किसके मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कम मीनिंग कौन से ऑप्शन का मिल रहा है, पहले हम उसे हटाएंगे। सो वी ओमिट one choice, then we try to omit the second choice, and then when we are left with just 2, then we think of the most appropriate answer. So this is another strategy which is called the process of elimination. तो आप ऐसे कर करके भी अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं, because sometimes फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करने से कंफ्यूजन हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स को। सो दैट इज एंटायरली योर चॉइस, विच एवर स्ट्रैटेजी यू वांट टू यूज। या तो आप शुरू से ही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पर
फोकस करें, या फिर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करें, विच इज द सेकंड स्ट्रैटेजी, विच मींस दैट यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग द लीस्ट मैचिंग ऑप्शंस। पहले आप हटाते जाइए कि ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, या इसके तो बिल्कुल ही कीवर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, a very famous program in India is telecasted by Mr. Shri Amitabh Bachchan ji, which is called कौन बनेगा करोड़पति। तो इसमें जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, इसमें एक लाइफलाइन आई थी which was called 50-50। So that 50-50 लाइफलाइन को अगर कोई कैंडिडेट यूज करते थे तो उसमें 2 गलत आंसर्स हटा देते थे, right? But that was done by the computer. So here your brain is the computer. You have to believe in yourself, and then you have to think which are the options that match the least, and why, you know, while you're omitting the answers and the options, ऐसे कर करके आप right answer पर पहुंच सकते हैं। So again, I told you 2 strategies of solving the MCQs. One is that आप normal वाला जो हमारा strategy होता है कि हम most appropriate option पर शुरू से ही focus करें, and the second one is that you use the process of elimination, जिससे हम जो बहुत ही कम मैच हो रहे हैं पहले उनको हटाते जाएं, so that हमारा confusion थोड़ा सा clear हो जाए। Again, the choice lies with you, whichever option you'd like to opt for. I'm sure once you start solving, try to solve with both the strategies. एक MCQs के सेट जो है आप इस पहली स्ट्रैटेजी से सॉल्व कीजिए, दूसरा MCQ का सेट आप सेकंड स्ट्रैटेजी से सॉल्व कीजिए, and then think for yourself whichever strategy suits you the best, or you can use a combination of both. अगर सपोज कीजिए पहली वाली स्ट्रैटेजी से आंसर नहीं समझ आ रहा है, you can jump to the second strategy. So this was all about MCQs. Again, I really hope everything that I'm sharing with you assists you in your studies and in your work, and I hope this is again of some use to you. So thank you so much for listening to me. God bless you all. See you again soon. Bye bye. ओके, उम्मीद करते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਰਗ ਰਗ ਚ ਦੌੜੀ ਸੁਟੀ FM ਬੋਲੇ ਤੋਂ।